Friends, the deep-seated, inveterate, genetic anti-Nehruism of the ruling BJP or the BJP-led government, now it seems that that anti-Nehruism extends to all and is anti-national icon. Every attempt is made to distort history, to distortedly reinterpret history, make innuendos, not realizing that in the process the BJP and the BJP-led government is guilty of denigrating the tallest of our leaders, those who are no less than commonly acknowledged to be national icons. I say this, friends, in the context of selective leaks to suggest that between 1948 and 1968, mark the years, Pandit Jawaharlal Nehru, the word used is snooped upon the family of Netaji Subhash Chandra Bose. Now I want to just ask you to analyze, because when these things are done, look at the harm it does to the nation for cheap political scoring and debate scoring points. The allegation is that from 1948 to 68 this happened. In making this allegation with a blind-eyed anti-Nehruvian agenda, the government, the BJP, the RSS and all allied organizations forget who were the prime ministers in this time. So the allegation is against Pandit Jawaharlal Nehru, against Lal Bahadur Shastri, against Gulzari Lal Nanda, and also against Indira Gandhi. Now the IB, who is supposed to have done this surveillance, common ground, directly reports and cannot move without full authorization, involvement, participation of the Home Minister. So the allegation by the BJP is about Sardar Vallabhbhai Patel, because everything is grist to the political mill. For cheap politics, nobody is sacred. C. Rajagopalachari, I've got the dates, I'm not telling you the dates of the Home Minister of the Chennai. Kailashnath Karju, or Home Minister. Govind Ballabh Pant, Lal Bahadur Shastri himself was Home Minister. Gulzari Lal Nanda and Yashwantrao Chauhan. I am taking you the 46 onward, 48 period to 1968-70 period. Now, you are the government. That's the third point I am making. So all national icons as prime ministers denigrated, all national icons as home ministers denigrated. Now the third point. You are the government. You are in charge of all documentation. Why have you done selective leaks? Very few file notings only. No declassification of even the correspondence which goes with those very same file notings. See, first of all, the file notings are selectively leaked. Let us say from A to X. But even the correspondence relating to A to X, as you know, each file has got a file noting section and a correspondence section. The correspondence section is not available. So people should not get a holistic picture. Please clarify. It is our question to the government. You have to clarify where are those letters. Fourth, please tell the nation whether there was surveillance. And then please tell the nation, if there was surveillance, what are the reasons of the file. Not by leaking selective file notings, but by the full correspondence. Why is it, I am asking you directly through you to the government. Clearly the government or the BJP led government has leaked this information to malign, to defame. I am asking therefore three sub-questions. Why is it that 58 related files are still kept classified by the PMO on this subject? 58.
Second sub-question, why is it that 29 such files are further additionally kept classified by the Home Ministry? That is 58 and 29 is total 87. Third sub-question, why is it that as recently, friends, this is very important, on 17th December 2014, just before the close of the Parliament session, no less than the Prime Minister of this country, Prime Minister Modi, refused to declassify 87 files, which include these 58 and 29, specifically in Parliament saying that we are not declassifying it on grounds of national security and good relations or friendly relations with foreign countries. You are raising such innuendos, why don't you share full information? Incidentally, and I don't want to get into a debate, at the same time the Prime Minister was saying this in Parliament, in the same year earlier, Mr. Rajnath Singh, that time not Home Minister but now Home Minister, said that every scrap of paper about Shri Netaji Subhash Chandra Bose will be declassified and revealed and opened. Directly contrary to what the Prime Minister said later in December. Friends, the argument proceeds on the assumption that Messrs. Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Gandhi Nanda and Srimati Indira Gandhi, Shri Vallabhbhai Patel, Rajgopalachari, Jalastan Kachru, Govind Vallabh Pant, Lal Bahadur Shastri, Gandhi Nanda and Yashwantrao Chavan were verified that Netaji would come back and grab their posts. I am being very crude, I apologize, but this is the way the BJP RSS mind works. I seek apologies on their behalf. Now I want to ask you lastly, do you remember, friends, that in 1950, this is supposed to be an allegation till 1968, for 5 years from 50 to 55, the Shahnawaz Khan committee sat and gave a report at 55-56, holding that Netaji has died. I am not on the merits of that report. That is in 50-56. And yet all these names I have taken were so terrified about his return that that is the cause, according to the BJP, of the surveillance. Now, thereafter in 1970 to 74, a Costa committee sat on the same subject. So you have done period 68, but now we are just after 68, 70 to 74. Same conclusion as Shahnawaz committee report. I am not on the crash, on the details, on the Dewan, etc. I am on the fact that death was confirmed in 50-56, it was confirmed or reconfirmed in 70-74. And even the Mukherjee committee report, which came much later in 2005, did not doubt the death but said the cause is not known. Now, where is the basic premise of this terror of return in this light? Friends, this is the usual BJP RSS trick of shoot and scoop, misinformation, half information, petty politicking, no regard for national icons, lack of dignity of discourse, cheapening our political discourse, and treating everybody, howsoever sacred, as grist fodder for their political purposes. ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ एक उद्देश्य से, जो उद्देश्य बीजेपी का, आरएसएस का, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार एनडीए का सर्वविदित, यानी नेहरू का विरोध किसी भी रूप में, परोक्ष या सीधे रूप में, इस उद्देश्य से जो घोर अन्याय किया है सरकार ने और बीजेपी और उनकी संस्थाओं ने, हमारी पूरी राजनीतिक वार्तालाप को सस्तीकरण, राजनीतिक वार्तालाप में जानबूझकर द्वेष और मतभेद की भावना उजागर करना, सिर्फ सस्ती राजनीति के लिए, ऐसे महान व्यक्तित्व जिनको पूरा देश सदियों से राष्ट्रीय आइकॉन मानता है, अभूतपूर्व व्यक्तित्व के व्यक्ति
उन सब का डिफेम करना, उनकी मानहानि करना, उनके बारे में परोक्ष और सीधे रूप से ऐसे संकीर्ण भाव प्रकट करना जो भर्त्सना योग्य है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उद्देश्य एंटी नेहरूइज्म का, जिससे ये प्रेरित है इस प्रकार की अवसरवादी लीग्स, उससे बीजेपी आरएसएस ये नहीं समझती कि उन्होंने साथ साथ 48 से 68 तक जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा और श्रीमती इंदिरा गांधी, उन सब पे आक्रमण किया है, आघात किया है और एक बहुत बड़ा उंगली उठाई। लेकिन साथ साथ हम सब जानते हैं कि आईबी सीधा गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के नीचे काम करती है, तो साथ साथ वही उंगली, वही इंसिनुएशन, वही आक्षेप, वही आरोप लगाए गए हैं। श्री वल्लभ भाई पटेल, मैं आपको साल नहीं दे रहा, 1946 के आगे बढ़ रहा हूं मैं गृह मंत्रियों के बारे में। वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, कैलाशनाथ काटजू, गोविंद बल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा और यशवंतराव चव्हाण, ये सब आक्षेप, आरोप, इन्वेंटो, इंसिनुएशन सब उनके बारे में ले रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत, राजगोपालाचारी। तीसरा, सरकार आपकी है, सत्तारूढ़ आप है, कृपया बताएं कि अवसरवादी की चरम सीमा नहीं है कि आपने बहुत कम अल्प मात्रा में फाइल नोटिस रख दी है सामने, लीक कर दी है या पारदर्शिता के नाम पे सामने लाए हैं, और उन्हीं फाइल नोटिस के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस का सेक्शन होता है, जो सब व्यक्ति जानते हैं हर फाइल में होता है, उनको नहीं बताया गया, उनको नहीं खुलासा उनका नहीं किया गया, उनको सामने नहीं लाया गया, उनको डिक्लासिफाई नहीं किया गया। तो संपूर्ण एक पूरी तस्वीर आप नहीं चाहते देश के सामने रखना। आप आक्षेप और आरोपों द्वारा अधूरी तस्वीर के आधार पर राजनीति खेलना चाहते हैं। आपको मालूम है अच्छी तरह से, आज 1 वर्ष होने को आया, 90 में 3 कम, 87 फाइल्स, लगभग 60 फाइल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में और लगभग 30 फाइलें गृह मंत्रालय में, इस विषय पे अभी तक डिक्लासिफाई नहीं की। अगर आप इस पर सच्चा डिबेट चाहते हैं तो सब डिक्लासिफाई करिए, सरकार आपकी है, कोई नहीं रोकता आपको। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 दिसंबर 2014 को संसद के अंदर औपचारिक वक्तव्य में कहा कि 87 फाइल्स हम राष्ट्रीय सुरक्षा और देशों के बीच में आपसी सौहार्द के कारण खुलासा नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि जनवरी 2014 में जब राजनाथ सिंह जी कटक में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हर वो कागज का चीथड़ा या पत्ता जो इस मुद्दे पे संदर्भ में लिखा गया है हम सब देश के सामने रखेंगे। लेकिन उस बात पर नहीं जाना चाहता, तो गृह मंत्री नहीं थे, विपक्ष के नेता थे। लेकिन आपकी सरकार, आपने इन फाइलों को नहीं खोला और आप इस प्रकार के आक्षेप कर रहे हैं। और आक्षेप का मूल आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन ये है, और मैं माफी चाहता हूँ लेकिन सच्चाई को स्पष्ट रूप से रखना ही आवश्यक है। ये बहुत एक सस्ते रूप का आरोप है, बहुत सस्ते रूप का आरोप है, लेकिन आरोप का उद्देश्य लगता है कि सब लोग उस समय 48 से 68 के बीच में भयभीत थे कि माननीय नेताजी आके उनकी कुर्सी छीन लेंगे। मैं त्रुटि कह रहा हूँ, मैं माफी मांग के कह रहा हूँ, लेकिन यही आक्षेप है और मैं माफी बीजेपी आरएसएस की तरफ से मांग रहा हूँ। तो कृपया ये बताएं कि जब 50 से 56 के बीच में, यानी हमारी स्वतंत्रता के 2 वर्ष बाद ही शाहनवाज समिति ने एक 6 वर्ष की जांच के बाद एक रिपोर्ट पे ठोस लिख दिया कि माननीय नेताजी की मृत्यु हो गई है, तो इतना बड़ा भयंकर भयभीत होने का माहौल कहां से पैदा हो जो इस उद्देश्य को साबित करता है जिस उद्देश्य से लिखी हुई है। यही नहीं, 1970 से 74 तक खोसला समिति बैठी
और उसकी रिपोर्ट ने भी उसी बात की पुष्टिकरण किया। मैं रिपोर्टों के औचित्य पे, उनके तथ्यों के आधार पर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ये गलत डिबेट है कि वो क्या त्यौहार में उनकी मृत्यु हुई, उनकी क्रैश हुई नहीं हुई, उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब 56 से पहले से एक जांच आयोग के अंतर्गत मृत्यु साबित हो गई, तो इस आक्षेप, आरोप, इंसिनुएशन, इन्वेंटो का आधार कहाँ है, जिसके आधार पे आपने ये अवसरवादी लीकेज किए हैं कल से? मैं समझता हूँ इन सबका जवाबदेही आवश्यक है। इन सबकी सीधी, साफ को ही पारदर्शी रूप से संपूर्ण तस्वीर को सामने रखना आपका औचित्य, आपका उत्तरदायित्व बनता है। आप सरकार में है, न कि इसके ऊपर सस्ती राजनीति खेले, क्योंकि ये बहुत हमारे महान, महामहिम, राष्ट्रीय लेवल के आइकॉन्स हैं और राजनीति को परे हटके हमें इनको उस पर नहीं घसीटना चाहिए।